Assalamualaikum. This is question number 5A from model paper 2025, secondary chemistry. So here the question is explain the structure of benzene according to molecular orbital treatment. Also write two chemical reactions in which benzene behave as unsaturated hydrocarbon. So first see the strategy, what to do in this answer. First, your answer should have proper headings because this is a long question of 8 marks, and clearly mention the following headings: molecular formula, hybridization, and the hybrid orbitals with angle. Unhybrid p orbital mention करना भी जरूरी है. Overlapping of sp2 hybrid orbitals. तो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल को मेंशन करना भी जरूरी है. फिर इसके अलावा ओवरलैपिंग ना सिर्फ मेंशन करना है sp2 ऑर्बिटल की, बल्कि उसकी डायग्राम भी जरूरी है. नेक्स्ट इज द साइडवेज ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स. चाहे तो उसी डायग्राम में कर दें या न्यू डायग्राम में हेक्सागोन बनाकर कीजिए, जैसा कि अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा. आखिर में रेजोनेंस हाइब्रिड, वैसे तो इस क्वेश्चन के लिहाज से जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा आपको एक एडवाइस है, मशवरा है कि आप रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ कीजिएगा. फिर आखिर में जो दो रिएक्शन जिसमें बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे बिहेव कर रही है, उसके लिहाज से फिर हम दो रिएक्शन देंगे: एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ क्लोरीन इन बेंजीन. तो सबसे देखते हैं, पहली हेडिंग है आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन. So you can use the heading molecular orbital treatment. Better to write molecular orbital treatment as per the question. Benzene is a cyclic hydrocarbon. We have to mention this because this is one of the aromatic compound, and aromatic compound must have the cyclic ring, which is composed of 6 carbon and 6 hydrogen atoms, where each carbon atom is bonded with one hydrogen and two other carbon atoms. Hybridization is sp2 because every carbon is forming a double bond. So it is sp2 hybridized. So it has three equivalent partially filled sp2 hybrid orbitals and one hybrid p orbital that we can draw the diagram. These are the three sp2 hybrid orbitals and one pz unhybrid orbital. This is unhybrid, not E. Now sp2 overlap. Now each sp2 hybrid orbital, these three are sp2 hybrid orbitals, overlap to sp2 hybrid orbital of adjacent carbon to form a sigma bond. End-to-end overlapping, head-to-head overlapping is forming sigma bond. So you can see that this is the sigma bond. Another sigma bond is there. So each is forming two sp2 sigma bond with the adjacent carbon atoms which have the same sp2 orbitals, thus forming regular hexagon. Now see, when other carbon atoms are also, so they form hexagon. So one sp2 hybrid orbital is still available. This one, it has not formed any bond. And deliberately, I have not shown here the pz unhybrid orbital for the simplicity of the diagram. Although every carbon has one one pz unhybrid orbital like this. If you want to draw, then no problem, you can draw it. So every carbon has this unhybrid pz orbital. बहुत खूबसूरत डायग्राम का होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसको प्रॉपर जगह पर प्रॉपर लेबल होना भी जरूरी है.
तो बेहतर है कि यहाँ पे किसी एक कार्बन मेंशन कर दें कि ये इसके sp2 ऑर्बिटल्स हैं, और ये मेंशन कर देंगे इसका p अनहाइब्रिड है। आप लाजमी नहीं है कि आप इसको z ही लिखें, z के बजाय ये तो एक्स वाई जेड तो हमने इसको रिप्रेजेंटेशन दी हुई है ना, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। तो एक को भी लेबल कर दिया तो काफी है। ओके, नाउ सी द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। This sp2 orbital that is still available for each carbon atom in the benzene ring, it forms sp2s sigma bond. So I have redrawn this diagram without pz orbitals. I just wanted to show hydrogen atoms here. So s orbital of hydrogen form a sigma bond with the sp2 orbital of the carbon. In one of the diagram we have mentioned, so in other diagram we not uh, you don't need to mention the orbitals again. We have already written here as well. So in this way our regular hexagon is formed, and at every at every carbon of the yeah, corner of the hexagon there is one hydrogen that is protruding outward. So 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms are arranged in this way, and every carbon atom has unhybrid p orbital. I'm not mentioning in every diagram. Even you don't need to uh, draw here the pz orbital. It's enough, and it is accepted diagram. Now see overlapping of unhybrid p orbitals. So the unhybrid p orbital that we have mentioned, that this is the pz orbital. So this pz orbital, now hexagon is formed in the line that show just like the bonds, and we have just shown the unhybrid p orbitals here. So we know that every p orbital is parallel to another unhybrid p orbital, so they can form their they can overlap parallelly to form pi bond. But it not only can form pi bond between these two and these two, as you can see here, that one way is that pi bond is between these two and these two, and we show the electron cloud above and below the plane. But it can also be like this, maybe they overlap with each other. So both of these diagrams are possible. So it can go in this direction or in this direction, or they may be like this. They are resonating structures. What are resonating structure? We will see in the next slide. So the unhybrid pz orbitals of two adjacent carbon atoms overlap sideways to form a pi bond between two carbon atoms. Therefore, three alternate double bonds are formed between carbon atoms in a ring, and they are interchangeable, because there is no restriction that these two form the pi bond and these two not. These two can also form, as you can see in this diagram. So this 1 and 2 are the resonating hybrid. They are in resonance. Now see in the next now see, since each carbon atom has a parallel unhybrid orbital p orbital, so they can overlap in either way, in between or in between, and they continuously changing their positions. So instead of writing individually these orbitals or these double bonds, we can draw the ring above the plane, above this hexagon, and below this plane. So below the plane and above the plane there is a continuous single orbital, that is pi or
pi electron orbital. So single carbon-carbon bond length in benzene are same, that is 1.39. If it was the case, then the bond length of this bond should be 1.34 angstrom and the single bond should be 1.54 angstrom. As this is not the case here, and we found through different techniques that all the bonds in benzene are equal and they are of 1.39 angstrom. That is neither of double bond nor of the single bond. So each orbital overlap with its neighbor equally. Therefore, all the 6 pz orbitals overlap each other to form a single molecular orbital. So this single molecular orbital is shown in this electron cloud diagram in the form of ring. In such a way, an electron cloud is formed above and below the ring. And all the pi electrons are present in pi electronic cloud. Thus, the position of pi electron in benzene is not fixed but delocalized. So it shows the aromaticity of the benzene ring. Now see the resonance hybrid. You don't need to include this definition. This is for you, that the phenomena in which the position of double bond or pi electrons are changed without altering physical and chemical properties of compound is called resonance, and the structures are called resonating structures. So you don't need to incorporate this definition in your answer, and if you do this, then still there is no problem. आपकी मर्जी, आप लिख दें, बस वो एडिशनल आपका जो टाइम होगा, लेकिन आपके पास एग्जाम में इतनी स्पेस जरूर दी जाएगी अगर ई शीट होती है तो, जो कि इस साल शायद ई शीट ना हो, लेकिन अगर ई शीट भी दी जाएगी तो आपके पास वहाँ पे इतनी अनफ स्पेस होगी कि अगर आप एक दो पॉइंट एडिशनल भी ऐड कर देंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. So in benzene, the pi electrons are present in pi electronic cloud and revolving below and above the sp2 plane, as you have seen in the previous diagram. It means that the position of pi bond or pi electrons of the benzene ring are fixed, which explain the high stability of benzene ring. So this is the reason of the stability of benzene ring. The structure, that is the modern representation of benzene, is the regular hexagon ring with an inscribed means inside, circle, which describes the delocalization of pi electrons. So these are the two resonating hybrid that we have seen in the molecular diagram as well. And this is the resonating hybrid. And for सिंप्लिसिटी, या आप ये कह लें कि आसानी से लिखने के लिए हम इसको जनरली डायग्राम में इस तरह से बना देते हैं. सो दिस रिंग शोज एक्चुअली द delocalization of pi electron, delocalization of pi electrons. So these electron pairs are delocalized within the ring. So this is called resonating hybrid. Means the structure is neither this nor this, but in between them, that the double bond or the pi electrons are delocalizing rapidly. So this is the first part of the question 5a. Now we will see the second part. The second part, we were asked to write the two chemical reaction that shows the benzene as unsaturated hydrocarbon. So first we have written the heading benzene as unsaturated hydrocarbon, ताकि आपका जो आंसर है वो वाजे हो जाए कि आपका भी ये पार्ट भी आपने सॉल्व किया. उसमें सब हेडिंग भी आप यूज करें. Addition of hydrogen. Addition of hydrogen occurs at 200 degrees Celsius. Generally, benzene, despite of the double bond, because double bonds are delocalized. So hydrogen or any other species cannot be added to the benzene ring because it is very stable. So at very high temperature and high pressure, benzene can undergo
addition reaction. So hydrogenation occurs at either you can write benzene in this form or in this form, जो आपको आसान लगे आप वो यूज कर लें, कोई इशू नहीं है. प्लस हाइड्रोजन एंड नाउ यू कैन फॉर्म दिस साइक्लिक फॉर्म. ये इस तरह भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको अगर हाइड्रोजन शो करना है, कार्बन भी शो करना है, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं. आप पर डिपेंड करता है ये एग्जामिनर के लिए तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं. दिस इज द डिस्प्लेट फार्मूला. डिस्प्लेट फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें आप सारे बॉन्ड शो करते हैं. क्लास 10 में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूले आपने पढ़े हैं, ये क्लास 10 में डिटेल से दिया हुआ है. तो आप ये देखिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं. डेफिनेटली इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम तो यही प्रेफर करेंगे आप ये बना दें. सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन. और अगर आपने ये डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखा है तो आप एरो पर ये दोनों कंडीशन लिख दीजिए. 200 डिग्री सेल्सियस, एरो को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, निकल की प्रेजेंस है, और ये कैटलिस्ट लिखा है तो कैटलिस्ट यूजुअली निकल होता है, और 30 एटमॉस्फेयर. So this is one of the addition reaction. It occurs in this condition. So writing the condition is important. यानी अगर आपने ये डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखा, आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ ये रिएक्शन लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. लेकिन अपनी सेफ साइट के लिए अगर आप ये टेक्स्ट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. Anyway, next is the addition of halogen. In presence of sunlight, sunlight is again necessary, but this is not the theoretical substitution reaction. This is addition reaction. Benzene reacts with chlorine at the temperature above 50 degrees Celsius under 400 atmosphere. And remember that in new edition of the book, we have just written the high temperature and high pressure. So if you are unable to memorize this temperature and pressure, then you can forget it. Without temperature and pressure, you can write the high temperature and high pressure. It is also enough. So अगेन व्हाट हैपन. अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन ऐड होना है तो यहाँ पे उसको बैलेंस कर दीजिए तो बेहतर है. वैसे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन एडिशन रिएक्शन है, बैलेंस कर दीजिए इसे. तो यहाँ पर आप चाहें तो, क्योंकि हमारी बुक में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम टेम्परेचर मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में ही नहीं है. तो अब एक स्टूडेंट को कहाँ से मालूंगा, तो इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल होगा कि हाई टेम्परेचर, नॉट हाइट, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. And as a result, every carbon has one hydrogen, and in this bond line formula we don't need to write hydrogen atoms or carbon atoms, we just form a ring. But other atoms which are neither carbon or hydrogen, they must be mentioned. तो अमीनो एटम्स को मेंशन करना जरूरी है. तो इसका नाम क्या है? हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन. और अगर मजीद मेंशन करना चाहें तो कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. तो इस तरह से आपको 2 मार्क्स इस पार्ट के मिल गए, और 6 मार्क्स जो हैं आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन के गेन कर लिए. तो इस तरह से आपके 8 मार्क्स फुल मिल सकते हैं. केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है. एनीवे, सो दैट वाज क्वेश्चन 5 है. नाउ वी विल सी क्वेश्चन 5B.